Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें सुपरपोजिशन थ्योरम विषय रे पढिबा फॉर एसी एंड डीसी सर्किट तो फर्स्ट देखिबा एसी सर्किट पई तो यार स्टेटमेंट है इन a network containing linear impedance माने whose value does not change with the flow of current. Okay, now the energy sources, that is your generators. So in such a network the current flowing at any point will be the vector sum of currents which would exist if each source of EMF is considered separately, all the other sources being replaced at the time by their internal impedance. Okay, एबे याकू हमें प्रूव करिबा. So to verify this theorem, let us consider a very simple network with having two generators. देखो एटी E1 आउ E2 अछि एटा AC source. Okay, having internal impedance Z1 and Z2, right? आउ एटी आमे देखिबा को पाउछु करंट फ्लो करूची एटा I1 एटी अछि I2 मझिरे गोटे इम्पिडेंस अछि व्हिच इज Z3, राइट. तापरे एबे सेकंड सर्किट देखो एठी आमे कोन करछु E2 को रिमूव कर नेछु. ओके, राइट. E2 को आमे रिमूव करनेला सो दैट नाउ द EMF which is only E1 alone. ओके, एबे करंट को आमे कहबा सपोज I1 डैश आउ I2 डैश. ओके, तापरे थर्ड सर्किट देखो एठी. ओके, थर्ड सर्किट हला एटा. ओके, एबे उल्टा करिबा एबे E1 को आमे रिमूव करनबा. ओके, E2 अछि एक्टिंग अलोन. करंट को कहबा एबे I1 डबल डैश और I1 डबल प्राइम I2 डबल डैश, राइट. ताले एबे आमे अप्लाई करिबा किरचॉफ्स लॉ. ओके, सो किरचॉफ्स लॉ आमे सेकंड लॉ बा वोल्टेज लॉ को अप्लाई करिबा. सो फर्स्ट सर्किट रे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करले आमे पाउछु E1 equal to this much, E2 equal to this much, right. तापरे सेकंड सर्किट जो थरे कि E1 ओनली अछि, E2 को आमे रिमूव कर नेछु. सो अगेन किरचॉफ्स सेकंड लॉ विल गिव यू दीज इक्वेशंस. आउ थर्ड सर्किट रे जेतेबेले आमे कहिबा E2 is acting alone, E1 को रिमूव करनेला, then the Kirchhoff's second law will give you the equation like this. Okay, एटा गोटे पाइबा. आ गोटे equation for E2 will be this one, equation number 6. Okay, so हमें 6टा equation पाइला, right. Now adding equation 3 and 5 we will get the value of E1. Similarly adding equation 4 and 6 we get the value of E2, right. या कोई equation 7 आउ 8 दबा. Now equation 7 and 8 will be identical with equation 1 and 2 जेतेबेले दीटा जाको वोल्टेज सोर्स थिला फर्स्ट सर्किट पई. ओके, सो एबे जदि आमे 1 2 सहित 7 8 को कंपेयर करिबा ताले आमे पाइबा simply I1 equal to I1 dash plus I1 double dash. Now I2 will be equal to I2 dash plus I2 double dash. Okay, जोटा कि हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम कहउथिला. ओके, सो दिस प्रूव्स द सुपरपोजिशन थ्योरम जे टोटल करंट जोटा थिला. ओके, जेतेबेले दुईटा जाको EMF सोर्स थिला that will be equal to the individual current जेतेबेले हमें गोटे गोटे EMF सोर्स रिमूव करनेला. ओके, फर्स्ट जेतेबेले हमें E2 को रिमूव करला we were getting I1 dash and I2 dash. तापरे E1 को रिमूव जेतेबेले करला we were getting I1 and I2 double dash, right. Now the superposition theorem actually simplifies the network calculation when several generators are present. Okay, so याको अप्लाई करिवारो प्रोसीजर एबे आमे टिके देखि देबा केमती ए सुपरपोजिशन को आमे अप्लाई करि परिबा. फर्स्ट पॉइंट रे कहउची only one source is considered
at a time, and all the other sources are replaced by their internal resistance or internal impedance, if any, right? And if there is a current source, then it will be replaced by an open circuit, because it is having internal resistance that is infinity, right? ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଆମେ open circuit ରେ replace କରିବା current source ku. Then second point ହେଲା current in various resistors and their voltage drop is then calculated due to this single source. Okay, third point रे कହୁଛି this process is repeated for other sources one by one. Okay, तापरे fourth point रे ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ algebraic sum ବାହାର କରିବା of the currents and voltage drop over a resistor due to different sources, and it is then calculated कोटा जो algebraic sum को आमे calculate करिबा. ओके, आउ net current आउ voltage drop को आमे बाहर करिबा in any branch or resistor. Okay, now note that in case of AC network, according to the superposition theorem, in any network containing more than one voltage or current source, the current through any branch is the phasor sum of the currents due to each source acting independently. Okay, thus while analyzing the AC network by superposition theorem, one source is considered at a time, okay, and all the other sources being replaced by their internal impedances, and the amplitude and phase angle of the current due to this single source is then calculated through a desired branch. Okay, and the process is again say bhaliya ame repeat kariba for all the other sources one by one, and then finally ame yaro phasor sum bahar kariba currents ro through the desired branch, and hence we get the actual current. Okay, so ye dekhila ame AC source pai. Now let us apply the superposition theorem for the DC circuit. Okay, so sei bhaliya hi procedure ame ethi madhya apply kariba. This I have taken from another book. So dekho yaku ame direct circuit diagram ରୁ ବୁଝିବା. You can see here first circuit रे ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ଦୁଇଟା source of EMF ନେଇଛୁ. Now these two are DC. Okay, so plus minus symbol ଏଠି ଅଛି, so that ଏବେ current ର flow ବା direction ଟା ଏବେ fixed ହେଇଗଲା from negative to positive, right? So ଏଟା ଆସିଲା ଉପରେ I1 ଆଉ I2. Okay, तापरे एठी मझिरे जो रेजिस्टेंस टा निया हिची बा इम्पिडेंस भी तमे नहीं पारो, एठी फ्लो करछि करंट I3. नाउ एबे कोन करिबा आमे गोटे गोटे सोर्स को सेपरेटली बाहर करिबा. ओके, फर्स्ट V2 को आमे बाहर करनेला, देन अगेन वी आर गेटिंग करंट I1 डैश, I2 डैश, एंड दिस इज योर I3 डैश. तापरे जदि V1 को बाहर करछु, V2 ओनली रहउछि, देन द करंट इज I1 double dash, I2 double dash, and मझिरे रहउछि I3 double dash. So सेही भलिया आमे जदि कैलकुलेट करि जिबा ताले finally we will get the result as I1 equal to I1 dash minus I1 double dash. Okay, मन पकाओ AC सोर्स पई एठी प्लस होउतला किंतु DC पई एठी माइनस हला because एबे डायरेक्शन टा उल्टा अछि. Okay, similarly I2 will be equal to I2 dash minus I2 double dash. Okay, AC source पई again एठी प्लस होउतला. Okay, आउ जदि मझिरो जो करंट टाको आमे देखिबा flowing through the resistance R3, then I3 will be एठी हमरो प्लस आसीबो I3 dash plus I3 double dash. Okay, so यार steps बा procedure it is very much similar to that of your AC circuit. Okay, so this is all about your superposition theorem, and at the end आमे जदि देखिबा a point here to remember that superposition theorem cannot be applied to non-linear network. Okay, only you can apply this superposition theorem to the linear network. Non-linear network ପାଇଁ ଆମେ superposition theorem को apply करि परिबा नाही. Okay, thank you.